So, so this meeting is regarding the sequel. So ये sequel के बारे में है, जहाँ पे हम लोग एक डेमो लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि what this sequel is, ये sequel अपन क्यों यूज़ करते हैं, what is sequel and what is the uses of sequel. So सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं and I'm working as a data engineer in a product based company in Pfizer. एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन सीक्वल फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं बहुत दिनों से सीक्वल पे काम कर रहा हूँ. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. लाइक सो द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर meeting is that first we will discuss that why we actually need this particular sequel, and why we actually need this sequel, and क्यों क्या काम है और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं सीक्वल में. ओके, सो इफ़ वी कम टू दिस पर्टिकुलर डेटा, अगर हम लोग डेटा की बात करें, क्योंकि आज के डेट में डेटा बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में है. जैसे वी हैव डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, we have data in a semi structured form, we have data in a unstructured form. So structured form से हमें मुझे ये मतलब है कि we have data which is stored in rows and columns. Okay, and सारे डेटा जो कि rows, excel sheets या columns में stored हैं, these are called structured data. And we have different different databases like SQL server है, DB2 है, Snowflake है, PostgreSQL है. These are different different databases which we are using to store our structured data. Similarly, we have unstructured data, that is semi-structured data, that is we have XML files, JSON files, HTML files. These files are called semi-structured data, जहाँ पे data key और value pair में store होता है. Okay, now if we talk about unstructured data, like data सिर्फ structured और semi structured में ही store नहीं होता है. Images, videos, these are also a kind of data, but that is a unstructured data. But when we talk about maintaining and working on a structured data, जब हम लोग structured data और structured data पे काम करने के लिए जब हम लोग बात करते हैं, तब we talk about this particular SQL. अब ये SQL क्या है, SQL का मतलब क्या है, SQL का मतलब क्या है. दिस SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोगों जब भी हम लोगों को रिलेशनल डेटा बेसिस को मैनेज और मैनिपुलेट करना होता है, देन वी विल यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ओके, एंड सिर्फ डेटा बेसिस को ही मैनेज नहीं करना है, अगर उसमें कोई डेटा को स्टोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्टोर सम डेटा, इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट सम डेटा, इफ़ यू वांट टू add some data there, if we want to do some analysis in that data, ये सारे काम करने के लिए we will use this particular SQL. Okay, here you can see that SQL enables us to perform a wide range of operations such as querying, inserting new records, updating existing records. मतलब existing records को update करना हो या किसी information को delete करना हो, it's a very powerful tool which we use for data management analysis. Okay, now let's come to this point that क्यों SQL का क्या यूज है, why we are using it. So as you know that जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे ये IT का बूम हो रहा है, there are tremendous amount of data which is being generated, बहुत amount of data which is being generated there, and we want something to store that. Okay, so there are many things, like we have databases to store our data, we have Azure data lake, we have data lakes to store our data. And when we talk about this particular generation of large amount of data, वहीं पे बिजनेसेस ये भी चाहते हैं कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उस डेटा से हम लोग कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालें. ओके, और जब भी हम लोगों को वो मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने होते हैं, या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करना होता है, या उस डेटा से रिलेटेड कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के अपने बिजनेस को अच्छा रन करना होता है, फॉर दैट पर्पस वी विल बी यूजिंग दिस. एंड यहीं पे इंपॉर्टेंस आ रहा है सीक्वल. व्हेन वी स्टार्ट, जब भी हम लोगों को डेटा का मैनेजमेंट करना हो, या डेटा ड्रिवन रोल्स, लाइक बहुत सारे डेटा ड्रिवन रोल्स है, अगर उसका यूसेज करना हो, या अपने बिजनेस के बारे में इंसाइट्स निकालना हो, फॉर दैट पर्पस वी विल यूज दिस पर्टिकुलर सीक्वल. नाउ अब आता है the main part is why we need SQL. SQL का क्या काम है? SQL is used for data management. SQL data management के लिए काम आता है.
SQL is used for data analysis. Data management मतलब बहुत सारा डेटा है, we want to store that, we want to keep it in a structured form ताकि हम उससे कुछ meaningful insight निकाल पाए. Data analysis like वो meaningful, वो जो डेटा मैनेज करके अपन हम रख रहे हैं उससे रिलेटेड अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंसाइट्स निकाल पाएँ कि आपका रेवेन्यू पर ईयर क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम क्या है, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितने हुए किसी बिजनेस में. So for these analysis we will use this particular SQL. Okay, and standardization matlab we also see that how we will be creating, interacting with different databases, and we will store those data. Okay. Okay, let's अब क्वेश्चन आता है who uses this SQL. मतलब SQL, ये SQL कौन यूज कर रहा है. So these SQLs are used by many business professionals. Like कंपनीज क्या कर रही है, कंपनी आज के डेट में अपना सारा डेटा स्टोर कर रही है एक डेटाबेस में. ओके, सो लेट्स सपोज दैट डेटाबेस कुड बी अ SQL इंजन, दैट डेटाबेस कुड बी अ Oracle, दैट डेटाबेस कुड बी अ PostgreSQL. ये सारे डेटा दे आर स्टोरिंग into some databases. Okay, so business if and these businesses are using this SQL to analyze their data. Okay, developers are using this SQL. अब कैसे developers? Web developers. Let's suppose that some web developers who want to interact with databases. कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमारे database हमारे web pages में we are showing some data there. Okay, and when we are showing some data, then we want to interact with our databases. Okay, for this purpose also different developers like web developers, API developers, these are using this particular SQL structured query language. Okay, now the other who is using the SQL is analysts. So there are many analysts, there are different type of analysts. We will talk about that, like किस किस तरह के analysts होते हैं. So we have data analysts, we have financial analysts, we have marketing analysts. So these are different professionals, and the one thing which is common in all these analysis part is data. Okay, so ये सब जो सबसे common चीज़ है that is data, and in that what we are doing, we are storing data into that database and we are analyzing the data. अपन different statistical methods को use करके data को analyze कर रहे हैं, different mathematical operation, different logics लगा के हम लोग data को analyze कर रहे हैं और उससे कुछ meaningful insight निकाल रहे हैं. Okay, so let's understand the role of a business analyst. अब ये SQL तो हम लोग समझ गया कि okay, SQL का ये काम है, we are using the SQL, but different role वाले जैसे business analyst data कैसे SQL कैसे यूज कर रहा है, या डेटा एनालिस्ट SQL कैसे यूज कर रहा है, मार्केटिंग एनालिस्ट SQL कैसे यूज कर रहा है, डेटा साइंटिस्ट SQL कैसे यूज करते हैं, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज once you learn SQL, you also want to transition your career into some one of these parts. Either you will go for business analyst, either you will go for मार्केटिंग एनालिस्ट, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह जाओगे, डेटा साइंटिस्ट की तरह जाओगे. एंड एवरी ऑफ दीज डेटा रोल्स include a common thing, that is SQL, that is structured query language. Okay, so what is the role of a business analyst? So we have a role of this particular business analyst is that this particular business analyst do the data analysis part. Like ये data analysis part तो सब में common होगा. Like what they do, they actually extract, manipulate, analyze the data in various sources से and बिजनेस का ट्रेंड निकालते हैं कि एक बिजनेस का ट्रेंड क्या है. लेट्स सपोज अगर मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड वी आर मेकिंग फैंस. ओके, एंड देयर आर सम वेरियस 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस एंड यूजिंग द प्रीवियस डेटा वी आर एनालाइजिंग कि इस मार्च के महीने में कौन सा फैन ज़्यादा बिक रहा है, या इस अप्रैल का महीने में कौन से फैन ज़्यादा बिक रहे हैं, या शादियों के सीजन में कौन से फैन ज़्यादा बिक रहे हैं, किस टाइप ऑफ फैन ज़्यादा बिक रहे हैं. सो ऐसे एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, बिकॉज उसके पर्पस पे दे विल डिसाइड कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, हम लोग कितने कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, या कितने प्रोडक्ट्स हम लोग ज़्यादा शोकेस करेंगे कि इस मंथ में ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिके. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज based on the previous data what we are doing some analysis. The second part is reporting. So we are reporting what the business analyst is doing using this particular SQL. They are
दे आर जनरेटिंग रिपोर्ट्स की जैसे मैंने बताया अभी, फैंस. सो लेट्स सपोज कि वन पर्टिकुलर फैंस, या गर्मी के सीजन में कौन सा प्रोडक्ट, जैसे एक लेट्स सपोज वी हैव अ we have a company where we are manufacturing fans, AC, washing machines, but गर्मी में एसीज ज़्यादा बिकते हैं. ओके, सो व्हाट वी डू, what they will do, they will create a report stating that कि गर्मी में क्योंकि एसीज ज़्यादा बिकते हैं, start manufacturing these ACs more so that we can do the supply more. Okay, and these are totally based on data. They do requirement gathering. Let's suppose कि किसी बिजनेस ने किसी क्लाइंट ने बोला कि आई वांट अ इनसाइट फ्रॉम कि व्हाट, लाइक बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का काम ये भी है कि मेन कोर डेवलपमेंट टीम एंड द क्लाइंट, उसके बीच में एक लेयर की तरह काम करता है दिस पर्टिकुलर बिजनेस एनालिस्ट. एंड व्हाट दे डू, दे गेट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड and they put those requirement to this particular technical team, so that there is a transition between the client and the technical team, so that they can fulfill their technical requirements. Now let's come to this Power BI developer. So once you learn the SQL, Power BI developer, you are using SQL in a tremendous manner. Okay, based on these SQL only, they are creating data modeling, they are creating reports, they are creating visualization, and based on that visualization they are providing the data, analyzed data to their business stakeholders. And they make user friendly reports, so that easier हो हमें समझने के लिए कि एक डेटा का ट्रेंड कैसा है, या कोई पर्टिकुलर, अगर लेट्स सपोज इफ वी हैव अ फाइनेंशियल, इफ वी हैव अ बैंक, तो मुझे पता होगा कि ओके फ्राइडेज, थर्सडे एंड फ्राइडेज देयर आर मोर नंबर ऑफ कैश डिपॉजिट होता है. ओके, सो ये सारे रिपोर्ट्स अगर मुझे एक दिखाना हो, सो this is what a Power BI developer do. They usually and mainly make reports, visualization reports. Okay, next we have is data analyst. So data analyst का भी काम यही है that they do data collection, वो डेटा कलेक्शन करेंगे, एंड बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन दे डू डेटा एग्रीगेशन एंड एक्सप्लोरेटरी. डेटा एनालिसिस से मतलब है कि यूजिंग द सीक्वल क्वेरीज वो बहुत सारे एनालिसिस करेंगे ताकि कुछ कुछ ट्रेंड्स या इंसाइट्स निकाल पाए फ्रॉम दैट लार्ज डेटाबेस. एंड दैट इज व्हाट अ डेटा एनालिस्ट, अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड मार्केटिंग एनालिस्ट डू. They also do reporting and visualization, where they basically create or generate reports, dashboards and visualizations. Okay, now let's come to this. This is one of the unique role of that ETL engineer, and they also use SQL. Basically क्या होता है कि डेटा हमेशा टेबल्स और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता. वी हैव डेटा विच इज प्रेजेंट इन विच इज प्रेजेंट इन फ्लैट फाइल्स. वो फ्लैट फाइल्स में प्रेजेंट होते हैं. वही डेटा CSV फॉर्मेट्स में प्रेजेंट होता है. वही डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में प्रेजेंट है. वही डेटा पार्केट, जेसन, देर आर डिफरेंट XML फाइल्स के टर्म में प्रेजेंट होता है. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट to load that data into our database. And here comes the ETL engineer comes into a picture. What? And the basic task of a ETL engineer is that they do data extraction. Extraction मतलब different data sources से data को extract करके एक database में रखना. that एक database में रखना. This process is called data extraction. Once that data is being extracted into that data, what we do some transformation. Let's suppose हमें कुछ insights चाहिए, या हमें कुछ हमें null values का separation करना है, हमें data का cleansing करना है, हमें 2 या 3 कॉलम मिला के एक पर्टिकुलर कॉलम बनाना है, और सो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करना है डेटा के लिए. लेट्स सपोज वी हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. लेकिन अगर मुझे कोई फुल नेम पूछे, सो माय फुल नेम विल बी द कंकैटिनेशन ऑफ first name and last name. So what we will do for this process, for these type of transformations also, we will use this particular SQL. Okay, now once that this is being transformed, the data is being loaded into this different data warehouses. And ये data warehouses का काम ही यही है. Based on that data warehouses, we will start creating our and generating our reports. Okay, so ये loading. So basically this ETL engineer has 3 parts, that is extraction,
T for transformation and L stands for loading. Okay, extraction, transformation, and loading. Now, when we come to the role of SQL developer, so there are a different set of responsibility as a SQL developer, because SQL developer सिर्फ डेटा एनालिसिस पार्ट पे काम नहीं करता है. SQL developer use core SQL. बेसिकली अगर डेटाबेस का मैनेजमेंट करना हो, डेटाबेस का मैनेजमेंट मतलब अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना हो, टेबल्स क्रिएट करना हो, स्टोर प्रोसीजर्स क्रिएट करना हो, ट्रिगर्स क्रिएट करना हो, या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, for that purpose we will need SQL. Basically for creating a different structures where we can store our data. This is basically called data management. या किसी एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना, या एक वेब एप्लीकेशन को एक डेटाबेस से इंटीग्रेट करना हो, फॉर दैट पर्पस आल्सो वी यूज दिस पर्टिकुलर SQL. वी यूज SQL परफॉर्मेंस ट्यूनिंग. बेसिकली एक SQL डेवलपर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग भी करता है, वेयर जैसे मान लेते हैं हमें एक क्वेरी लिखना है जो 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर आपका रिजल्ट सेट लाके, तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको ट्यून करना, फॉर दैट पर्पस दिस इज आल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ अ SQL developer, and in this process they use a SQL. SQL developer also use data for reporting and analysis. This is same as the before which they are basically. अगर आप देखो तो सारे रोल्स में दिस एनालिसिस रिपोर्टिंग का काम सेम ही है. ओके, there is most of the work is same in all these different रोल. SQL डेवलपर का रोल हो, या मार्केटिंग एनालिस्ट का रोल हो, फिनेंशियल एनालिस्ट का रोल हो, डेटा एनालिस्ट का रोल हो, ये सारे जगह पे आपको डेटा का ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग करना पड़ेगा, डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, डेटा का रिपोर्टिंग करना पड़ेगा. ओके, नाउ let's talk about this particular financial analyst. So see, could be of different. If someone is working for a marketing agency, he or she will be a marketing analyst. Or if someone is working for a bank, or if someone is working for any of the financial institute, that will be a financial analyst, because there they will be because there they will be बेसिकली एनालाइजिंग द फिनेंशियल डेटा कि कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ, कौन सा ट्रांजेक्शन्स फेल्ड हुआ, कौन से ट्रांजेक्शन्स फ्रॉड है, कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकरिंग डिपॉजिट के हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के हैं. फॉर दैट पर्पसेस ये रोल सारे जो फिनेंस से रिलेटेड हो, basically that is the role of the financial analyst. Okay, so data scientist, as you know that data scientist is basically they are using different machine learning algorithms. Also they use data science algorithm, use AI algorithms. So for these purposes also, before that, when they want to create some features, or they want to frame their data, they will be using this particular SQL part. Okay, where they do data exploration and analysis, they do data transformation and preparation, they do reporting and dashboarding, and also create the model deployment and monitoring. We have another role, that is we will talk about this particular data engineer role. And ये data engineer role भी they will use SQL, where they do data ingestion. Data ingestion is same as uh, loading data from different sources. Okay, and creating a pipeline where we can ingest data from different sources. That is data ingestion. Then we have data transformation. Basically we transform data, use SQL to transform our data. Now we have data warehousing. Basically in this particular data warehousing, we are creating and designing different warehouses where we are storing our facts and dimension tables, and based on those facts and dimension table we will be getting our business insights. Okay, this is all about. Let's talk about this particular SQL nodes. Okay, SQL scrapers. So this particular SQL, in this particular course we will be covering fundamentals. मतलब SQL के fundamental, we will start from that ABCD. We will start from ABCD of that SQL fundamentals, and we will learn about that what are the basic SQL. We will I will also inform you about different techniques and different rules, or different concept of SQL fundamentals. Then we will talk about data manipulation and database design. These are some
SQL fundamentals. Let's move further. For SQL, we have different four type of commands, that is DDL, DML, DCL and TCL. And we will also learn about this कि DDL क्या होता है, data definition languages क्या होते हैं, create, modify, delete क्या होता है, how we can use that, data manipulation languages क्या होते हैं, data कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस क्या होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में व्हाट आर द डिफरेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डिलीट ट्रंकेट में अंतर क्या है, व्हाई वी यूज डिलीट, व्हाई वी यूज ट्रंकेट. These are few different type of languages or different type of commands which we have in SQL. Okay, let's move further. So these are the data types and operator. That numeric data types क्या होते हैं, text data types क्या होते हैं, date and time data types क्या होते हैं. We will learn about these things. We will learn about SQL operators. Okay, we will also learn about select clause क्या है, where clause क्या है, order by clause क्या है या group by clause क्या है. We will learn about this. After that, we will learn about this aggregate function, that sum, average, count. Aggregate functions कैसे करते हैं, group by कैसे करते हैं, having clause. Basically aggregation and grouping is a bigger topic where we will be aggregating our data. जैसे मान लेते हैं sum निकालना हो या average निकालना हो या mean निकालना हो, mode निकालना हो, ये सारी चीजों के लिए हम लोगों को डेटा को एग्रीगेट करना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा. फॉर दीज पर्पस वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप बाय हैविंग. So we will learn about these things also. We will learn about joins and relationships. That क्या होता है कि data are not only stored in a single table. क्या होता है, relational database में we store data in different tables. And when जब different tables में when we want to fetch data, when we want to fetch data from different sources, then we will be using this particular joins and relationships. Okay, subqueries क्या होता है, how we can use subqueries to join our tables. So these are joins where there are many things. We have different types of join, and we will talk about what are the different scenarios. क्या होता है, student know what is join and they also know the syntax of join, but they don't know how to implement and when to implement that particular join. And we will talk about the actual implementation and the scenarios where we will be using this particular joins. Okay, now we'll talk about correlated queries, nested queries and performance considerations. So sub queries are basically nested queries होते हैं where we use queries inside a query. So we will talk about this. We will talk about different data types. So we already said that, talk about that aggregation. So these are the things which we will cover in this particular syllabus. SQL fundamentals we will cover. There are many concepts. So this is a very short concept which I have written, but inside everything there are some 10-20 topics, 10-20 8 to 10 topics which we will cover. We will cover database designing, we will cover data manipulation, we will cover data constraints, advanced functions. Okay, cast क्या होता है, what are the use of queries, डेटा क्लिनजिंग में कैसे कोलीज एजनल काम आता है, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज में अंतर क्या है, फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग डेटा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट डेटा का फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन फिल्टर सम ऑफ द डेटा. क्लॉजेस क्या होता है, हाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस. We will talk about operators. What are the different operators, like, in, not in, between. These are some and, or. These are some operators where we use this for filtering our data. Then we will talk about different date functions. Different date functions क्या होते हैं हमारे, current time stamp, get date. There are different date functions. We will talk about that. We will talk about string functions. That strings में कैसे manipulation करते हैं, upper lower क्या होता है, how we can find a substring of a string. ऐसे ये different जितने भी functions, we will talk about that. We will talk about Windows function, mathematical function like floor निकालना, round करना किसी table को, या min max निकालना. These are some mathematical functions. We will talk about that. And there are, you don't this for these particular topics not only have 2 or more topics. It has many, at least 8 to 10 topics. Every subtopic, every topic has 8 to 10 subtopics, and I'm just giving you an overview. We will talk about table valued function, कैसे बनाते हैं, कैसे access करते हैं, कैसे उसको modify and handle करते हैं. We'll talk about scalar valued functions. So basically these table valued functions, scalar valued functions are a user defined function जो
यूजर खुद से बनाता है अपने से, दीज आर टू फाइंड। वी विल टॉक अबाउट जॉइंट्स कि कैसे डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन करके हम लोग डेटा निकालते हैं। वी विल टॉक अबाउट केस स्टेटमेंट, लूप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कीज, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंस की, यूनिक की क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट दैट। वी विल टॉक अबाउट पेजिनेशन क्या होता है। वी विल टॉक अबाउट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। पेजिनेशन इज बेसिकली क्या होता है कि जब बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है, वी वांट टू लोड आवर डेटा इन चंक्स, एंड जब चंक्स में डेटा होता है, वी वांट टू डू द पेजिनेशन, हमको तोड़ना पड़ता है, उसको पेज्ड करना पड़ता है। फॉर दैट पर्पस यू विल यूज दिस पेजिनेशन। स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएशन, डायनेमिक स्टोर्ड प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं, ट्रिगर्स कैसे बनाते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस। Most of the important, we will talk about this statistical concept because every data analyst, financial analyst, marketing analyst use this statistical concept. And if this statistical concept has mean, median, mode, standard deviation, Turkish French rule, histogram, we have different statistical concepts, and these data analysts and financial analysts use these particular statistical concepts. अब statistical concept जानना ही important नहीं है, जब हमें उसको इम्प्लीमेंट करना हो सीक्वल में, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। विल टॉक अबाउट डिफरेंट बल्क ऑपरेशन, कैसे डिफरेंट डेटा सोर्सेस हम लोग डेटा को इंसर्ट कराते हैं अपने डेटाबेसेस में। वी विल टॉक अबाउट बल्क इंसर्ट क्या होता है, ओपन रोसेट क्या होता है, ओपन जेसन क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। आई विल गिव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ ईटीएल एंड ईएलटी कंसेप्ट, दैट एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोडिंग क्या होता है और एक्सट्रैक्शन लोडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। We'll talk about cleansing. We'll talk about and then more of and all very important, we will create a project. So we have a data set, and using that data set we will I will teach you to how we can create facts and dimension table, and based on those facts and dimension table, how we can decide our KPIs, key performance indicators, and based on those key performance indicators, how we can create our facts tables. Okay. I will also provide some 50 product based questions, and from the day one itself we will create a hacker rank account, and we will start practicing SQL on that particular hacker rank. I will provide the SQL interview questions material. I have a material for that, and for each and every concept which we will be studying here, those each and every concept have I will provide the materials for that. Okay, for every concept I will be providing the document for that, so that you can revise, and every lecture has its own recording. We will create a playlist for that and share it to you. Okay, so this is all about this particular demo. Hope you understand about this particular uh, just a minute please. Yes, any questions so far, guys? Talib, Kriti, Nikhil, Sakshi, anyone? Guys, feel free to ask any question. So anyone? Okay, so see, the timing of this class is Saturday, Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. And here I already gave you a short introduction about what we are going to cover here. And if you have any questions, please feel free to ask in that group itself, or you have my personal number there. So if you are an experienced guy, if you feel that this particular syllabus is what we have already covered, so that is not the case. The topics looks the same, but the way we will be exploring those topics is more important. And if you're already working in different company, you are and if you are a new guy, if you are a fresher, if you don't have any idea related to this particular course or this particular sequel, trust me, we will start from the basic itself, where we will be covering every basic thing, and we will go to all the advanced topics we have in this particular session. So yes, any questions? If you have anything, please feel free to ask. I will appreciate it if someone will ask some question. Sakshi. Yes. Okay. Okay. Maybe they do not have any questions right now, but anyway, no problem. Sir, I think we can wrap up this call now. For now, and if they have any doubts, feel free to call me also. I have that my number there on my team. Don't get any confusion, guys. If you think that आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है
Yeah, you are struggling, even if you are struggling in a in your current job, if you are doing some production support, if you are your job is not have a inadequate amount of adequate amount of development work, if you want some guidance related to SQL or data engineering or ETL, please feel free to come to me and talk to me. I will appreciate it. And yes, that's it from my side. And hope I see you guys also in the actual lectures, actual sessions where we will cover these topics. And yeah, yes, okay, sir. We will wrap up, I think. So yeah, Preti. No, okay. कुछ लोगों के लिए रिपीट किया था, हाँ हाँ, सी, ओके, यस, ओके, सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन विजुअलाइजेशन पार्ट. सो ये विजुअलाइजेशन जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा. इट्स अ प्रोजेक्ट वेयर वी डू द डेटा मॉडलिंग. वी हैव अ डेटा सेट्स, हमारे पास डेटा सेट है. Based on that data set, we will create the data modeling. Then we will learn what is CDM, LDM, common data model क्या होता है, logical data models क्या होते हैं. Based on those logical and common data model, we will create dimensions and fact tables. And these dimensions and fact tables, we use it in the data warehouse. Okay. and एंड क्या होता है, ये प्रोजेक्ट इस पर्पज से है. लेट्स सपोज वी हैव अ कंपनी, एंड एक कंपनी का डेटा है हमारे पास. एंड जब वो कंपनी का डेटा, हमें उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और केपीआईज. बेसिकली जैसे एक रेवेन्यू, अगर एक कंपनी का मुझे रेवेन्यू निकालना है कि इस ईयर और लास्ट ईयर में रेवेन्यू डिफरेंस कितना है, सो इट्स अ केपीआई, इट्स अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहां से हम लोग परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर पाएंगे. सो वी विल क्रिएट प्रोजेक्ट्स लाइक दैट, एंड जहां पे हम लोग इनसाइट्स निकालना सीखें. ओके, वी विल, I will provide some of the KPIs, and based on those KPIs, we have to create different tables, and those tables will have, and उसके पीछे बहुत सारा मैनिपुलेशन होगा. You can't believe that how much manipulations it has for getting those KPIs into our database. So does it make sense to you, Kriti? Okay. Yeah, yeah, sure, sure. So hope you understand that. Yes, thank you. Sakshi, Gururaj, Nikhil, Talib. 10 a.m. to 12 p.m. Saturday, Sunday. Okay. 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 Sir, we can wrap up this call today, and we can start from next weekend the actual classes. We will try to get some more demos scheduled some other time. So yes, thank you so much, guys. Thank you for joining. Have a good day.